in presence in this hall. I am Dr. Tahir Chaudhary, General Secretary, Pakistan Academy of Family Physicians and consultant diabetologist working in Lahore. I welcome all of you in this 10th module of our ongoing Defeat Diabetes program. And I'm highly indebted to those who spared their valuable time because there is a heavy rain since last night in Lahore, but I can see some enthusiastic contenders in the hall, and I really appreciate your participation over here. Now, in today's module, we are moving one step ahead in our journey to defeating diabetes. Over the last 9 modules, we have learned quite a number of new things which were, once thought to be not working well in the treatment of diabetes, but during that course, that is the overwhelming response from across the country, that our people are learning a lot of new things which are going to be implemented in their practice in the coming months and years. I still remember that about a couple of years back, when I first floated this idea of diabetes reversal in one of our meetings at Lahore Gymkhana, everybody was looking heavenwards, and they were looking me in a disbelief that how is it possible that we are going to reverse diabetes, because we have always been taught that this disease is progressive and can never be reversed. But thanks to this course and our worthy, speakers, panelists, we have now been able to convince majority of our family physicians that diabetes can be reversed. And we have also got rid of many of the dogmatic views which are being, going for years and years. And this today's program is one step ahead, because many a times we diagnose type 1 and type 2 diabetes at our clinics, but there are certain rare types of diabetes which we just miss because of the fact that we have never been trained in diagnosing these conditions, although rare, but they are there. For example, if we move forward from here, as many as 95% of total number of diabetic patients are type 2 diabetics. Almost 5% of them are type 1 diabetics, and about 3 to 5% are rare forms of diabetes, which are, always missed, at least at the primary healthcare levels. Things are changing, my dears. Things are changing rampantly, at least in the field of diabetes and endocrinology. Almost 50% of the type 1 diabetes, which was once thought to be the disease of the youngsters, 50% of type 1 diabetes is now being diagnosed in a population who is more than 30 years of age. So जो हमें शुरू में ये बात बताई गई थी कि type 1 thin lean होते हैं, पतले होते हैं, type 1 youngster होते हैं, this is now being changed. Almost 1 out of every 3 newly diagnosed diabetic children, almost 1 out of 3 is type 2 diabetic, irrespective of the age. I am treating a patient at my clinic, that's a little child. She's barely 8 years old, and she's being treated with metformin, and she's a type 2 diabetic. So with the passage of time, we will learn to distinguish between these types of diabetes. It has been estimated that 70% annual increase in children diagnosed with type 2 diabetes every year, 7% annual estimated increase in children with type 2 diabetes. Similarly, in the past, overweight and obese patients were,
being overweight and obese was a traditional indicator for type 2 diabetes, but we have learned in this course a new term called TOFI, thin outside, fat inside. They are thin lean like me, but they are still presenting with insulin resistance, and they are type 2 diabetics, despite being thin and lean. Similarly, 50% of the type 1 diabetics are overweight now. 50% of type 1 diabetics are overweight now because of the continuous use of insulin over the years. And if during the course of the disease of type 1 diabetes, if they develop insulin resistance, now this is a new term for you. They are now called the patients of double diabetes. They are type 1 on the basis of the autoimmunity, but they are type 2 as well on the basis of the insulin resistance. So things are changing rapidly. Now, with that little background, it's my utmost honor and privilege to invite our today's panelist, Professor Rizwan Zafar Ahmed, who's a professor and head of the Department of Medicine at Akhtar Said Medical College, to take a seat on the stage. We have another very esteemed panelist from Karachi, and she is Dr. Zareen Kiran, assistant professor of diabetes and endocrinology at National Institute of Diabetes and Endo at Karachi. It's now my honor and privilege to introduce today's speaker, that is Dr. Saima Askari, who is the assistant professor of medicine and endocrinology. She is FCPS in medicine and FCPS in endocrinology, and she is now currently working as an assistant professor at Baka Institute of Diabetes and Endocrinology at Karachi. Now I sign off from here. Over to Dr. Saima Askari for today's presentations. Welcome, ma'am. I beg your pardon, and I correct myself. Today's speaker is Dr. Saima Askari. Big apology, and over to Dr. Saima Askari, please. Thank you for your nice introduction. Yeah, my name is Dr. Saima Askari. So with the name of Allah, I'm starting today's presentation. This is Bismillahir-Rahmanir-Rahim. The title of today's topic is very interesting and very challenging as well. Diabetes in children, differentiating between type 1 diabetes versus type 2 diabetes, MODY and LADA. As already you have told a little bit information regarding the prevalence of obesity and the characteristics of type 1 diabetes are changing now. So we will discuss in detail. And this is not a kind of formal presentation. I would welcome you all to write question and answer, and I hope by the end of today's session, we all should be able to differentiate between type 1, type 2 diabetes regarding major clinical differences. Although these are not present in every case, but at least we should all try to classify the patients of diabetes in their accurate diagnosis. The next objective of today's session is MODY, maturity onset diabetes of young. This is a rare condition and when to suspect. Then LADA, what is LADA? Is latent autoimmune diabetes of adult. Then how to approach them and why we are here. Significance of accurate diagnosis, why this is important to accurately classify the patient in their accurate diagnosis. So we will discuss one by one. Diagnosis is challenging, this is confusing. Yes, this is challenging, this is confusing. Because type 1 diabetes, but जैसे कि पहले बताया कि initially it was supposed to be in younger people, बच्चों में younger के अंदर बिल्कुल thin lean से patients होंगे और type 1 का adult के अंदर as such कोई concept इतना नहीं था.
but we are appreciating type 1 diabetes can occur at any age. Yes, younger में भी हो सकती है, elderly age में भी हो सकती है. Although prevalence जो peak आती है prevalence की, it may vary. यंगर एडल्ट्स में हो सकती है, जब प्री प्यूबर्टल एरिया होता है, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, या फिर जब वो 60s में आ रहे होते हैं लेट उसके अंदर, तो इट कैन बी. टाइप 2 डायबिटीज एक क्लासिकल हमारे जहन में था जी, मोटा सा बंदा होगा, मिडिल एज होगा, तो फिर उसको टाइप 2 भी. टाइप 2 बच्चों में नो, बच्चों में तो टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती. वी वर इनिशियली थिंकिंग, इट हैज बीन चेंज नाउ. मोडी के बच्चे क्या डायग्नोज होते हैं और लाडा क्या होती है, इसको हम करके डिस्कस करते हैं. तो रियली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो अ लिटिल बिट lengthy topic, but I have make it simple and will try to present it as simple and easy to understandable as it can be, inshallah. So we all know what is type 1 diabetes. Type 1 diabetes is we all know that this is because of beta cell destruction, and it may lead to and usually lead to absolute insulin deficiency. That means insulin pancreas से produce हो ही नहीं रही है, तो टोटली पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और उसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस हो रही. जो वर्चुअली इसकी डेफिनेशन है, दैट इज इट कुड बी इम्यून मीडिएटेड, इट कुड बी इडियोपैथिक. दो सब टाइप हो गई टाइप 1 डायबिटीज की. ऑल्दो लाडा इज अ सब टाइप ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, इसी अम्ब्रेला के अंडर आता है, बट वी आर गोइंग to discuss one by one. So type 1 diabetes is totally beta cell destruction which lead to absolute insulin deficiency in most of the cases. It could be immune mediated, it could be idiopathic. And then type 2 diabetes. Type 2 diabetes may range from predominantly insulin resistance with relative insulin deficiency, means pancreatic beta cells insulin produce कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस है तो उन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है. मे बी ये रेंज हो रही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन प्रीडोमिनेंट फैक्टर या सिक्योरिटी डिफेक्ट आ रहा है विद इंसुलिन रेजिस्टेंस. बोथ कैन अकर इन टाइप 2 डायबिटीज. इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई, या प्रीडोमिनेंटली सिक्योरिटी डिफेक्ट आ गया है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस उसके साथ है, ठीक है. अदर स्पेसिफिक टाइप, यूजुअली वी नो कि भाई टाइप 2 डायबिटीज 90 to 95 हमारे पास होती है, बाकी 5% में टाइप 1 होगी. जो रिमेनिंग अदर्स टाइप्स हैं वो तो बहुत ही रेयर है या अनकॉमन. बट क्योंकि हम फोकस हमारा आज का चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स के दरमियान है, तो उसके अंदर हमें और डायबिटीज की टाइप भी जरूर देखनी है, ठीक है. दिस इज बेसिकली ओवरव्यू. मैंने ट्राई किया है कि ये बहुत सिंपल हो, आप सबको इसमें से मैक्सिमम आपको याद हो जाए इसको, और आप इजीली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इसको अप्लाई कर सकें. तो न्यूनेटल डायबिटीज हो सकती है, मोनोजेनिक डायबिटीज हो सकती है. मोनोजेनिक का वर्ड यूज करते हैं हम कि एक जीन, जैसे नाम बता रहे सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट आ गया, मोनोजेनिक डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, बोथ आर पॉलीजेनिक, यानी कि मल्टी फैक्टोरियल होगी, जिसमें कई जेनेटिक भी इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी. बट इन मोनोजेनिक डायबिटीज सिंगल जीन प्रॉब्लम इज देयर. मोनोजेनिक डायबिटीज के अंदर ही मोडी भी आती है और सिंड्रोमिक एसोसिएटेड भी आती है, ठीक है. देन सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज इंड्यूस्ड बाय सेवरल ड्रग्स एंड टॉक्सिन कैन कॉज. स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया, बच्चों के अंदर स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया इज आल्सो अ कॉमन फाइंडिंग. Then several endocrinopathies like hyperthyroidism है, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस है, जिजेंटिज्म जैसे बच्चों में हो रहा था उसमें हो सकता है. तो सेवरल हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि अगर एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाए तो वो भी डायबिटीज करा सकते हैं. तो एंडोक्रिनोपैथीज भी आपने जरूर सोचनी है उसके डिफरेंशियल्स के अंदर. देन डिजीज ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियास. एक्सोक्राइन पैंक्रियास एक तो हमने कहा था जी एंडोक्राइन पोर्शन है, और एक हो सकता है हमारे पास कि जो उसका सेकंड वाला पोर्शन है उसकी कोई डिजीज हो जाए. दीज ऑल मे लीड टू डायबिटीज, बट दे आर डायबिटीज की टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगी. डायबिटीज तो है, हाइपरग्लाइसीमिया तो हो रहा है, बट टाइप्स विल बी डिफरेंट. जो टाइप 1 डायबिटीज है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इन यंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, ठीक है. उसके बड़े क्लासिकल सिम्टम्स पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं 3rd ईयर से, ठीक है. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो गई है,
थर्स्ट बहुत हो रही है, ठीक है, और फिर भी वेट लॉस हो रहा है। पॉलीयूरिया बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ऑस्मोटिक डायूरिसिस हो रही है। ऑस्मोटिक डायूरिसिस क्या से डिहाइड्रेशन हो गई है, पेशेंट को प्यास लग रही है, वो थर्स्टी हो रहा है और पानी का इंटेक बढ़ा रहा है। दिस इज द बॉडीज कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। वेट लॉस हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन इज द ओनली एनाबॉलिक हार्मोन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे पास जितना भी हमारा मेटाबॉलिज्म के हवाले से हार्मोन जो कि बॉडी को बिल्ड करते हैं, उनका कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। तो वेट लॉस इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। देन हाइपरग्लाइसीमिया आकर इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम रखते थे टाइप 1 डायबिटीज के अंदर, जो क्लासिकल इसमें आता है कि इमीडिएट नीड, पेशेंट ओरल पे एडजस्ट नहीं हो पाता, ओरल पे कंट्रोल नहीं हो पाता, उसको फौरन ही इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज भी इंसुलिन में कन्वर्ट हो सकती है कि इंसुलिन की जरूरत पड़े, बट इमीडिएट नीड नहीं होती टाइप 2 डायबिटिक के अंदर। प्रोग्रेसिव फेलियर होता है, तो प्रोग्रेसिव के अंदर जो इसका प्रीवियस नेम था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस, वो नाम भी इसीलिए चेंज हो गया है क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक मे नीड ऑफ इंसुलिन लेटर इन देयर डिजीज कोर्स। टाइप 2 डायबिटिक के अंदर भी आप देखते होंगे, आप प्रिस्क्राइब करते होंगे इंसुलिन को, लेकिन लेटर जब एडवांसमेंट हो जाती है उनकी डिजीज प्रोसेस के अंदर। सो इंसुलिन की डिपेंडेंसी दोनों में आ सकती है, टाइप 1 में भी आ सकती है, टाइप 2 में भी आ सकती है, बट डिजीज कोर्स के इमीडिएट नीड जो होती है वो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स टाइप 1 डायबिटिक। फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, दिस इज आल्सो अ कॉमन फीचर फॉर टाइप 1 डायबिटिक, स्पेशली इन यंगर चिल्ड्रन। यंगर चिल्ड्रन के अंदर, यंगर अडल्ट के अंदर जो 1/3 बच्चे वो प्रेजेंटली डीके के साथ होते हैं, ठीक है। तो इनमें तो आपको क्लासिकल फीचर्स मिल गए, ऑल्दो बट रिमेंबर हियर डीके कैन अकर इन अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज एज वेल, लाइक कीटोसिस प्रोन डायबिटीज, केपीटी। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि टाइप 1 डायबिटिक के अंदर 80% के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती ही नहीं है, जबकि टाइप 2 डायबिटिक के अंदर आपको पता है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिलती है। The onset of type 1 diabetes may be slower and more variable as compared to children in adults. यही वजह है कि जो टाइप 1 डायबिटीज होती है यंगर के अंदर रिलेटिवली इजीली पिक हो जाती है, उनके हॉलमार्क सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस के साथ आ रहा है पेशेंट, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, मे बी डीके में चला गया, आपने इंसुलिन स्टार्ट कर दी है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है, हमने कहा था इट कैन अकर एट एनी एज। वो वक्त के हिसाब से, जैसे हम पहले कहा करते थे कि टाइप 1 डायबिटीज इज डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, नो, टाइप 1 डायबिटीज कैन अकर एट एनी एज। तो अगर अडल्ट के अंदर टाइप 1 डायबिटीज होती है तो वो स्लोअर उसका ऑनसेट होता है और मोर वेरिएबल होती है, और उसके सिम्टम्स जैसे हमने कहा कि जो चिल्ड्रन के अंदर जो स्पेसिफिक सिम्टम्स थे, जो क्लासिकल टिपिकल सिम्टम्स थे, वो नहीं मिलते हैं अडल्ट के अंदर, इसीलिए अडल्ट में डायग्नोसिस डिले होती है। Although still type 1 diabetes is most common, it remains most common in adults, in young adults and children, although but टाइप 2 डायबिटीज बहुत बढ़ रही है बच्चों के अंदर, 12 ईयर्स से कम उम्र बच्चे नजर आ रहे हैं, यंगर अडल्ट नजर आ रहे हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट था जी 40 ईयर्स के बाद होती है, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। क्या वजह है इसकी? वही वजूहात जो बड़ों के अंदर होती है, जैसे ओबेसिटी। जब प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी बढ़ रहा है, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम ओबेसिटी की एपिडेमिक को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही ओबेसिटी, वही का प्रिवेलेंस बच्चों में भी आ रहा है। स्कूल गोइंग बच्चों में, पाकिस्तान के अंदर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर ओबेसिटी का प्रिवेलेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, हमारे पास भी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओबेसिटी इज द मेजर रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री आपको मिल जाती है रिलेटिव टू एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज। फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक तो 2 साल कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज वर रिस्ट्रिक्टेड, बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, जो कुछ उनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी उनके गेम्स हो रहे हैं, सब वर्चुअल हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज वर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। मोटापा बढ़ने की वजूहात के अंदर जाहिर है कि आप खाना पीना बढ़ गया है, जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है और उनकी ओबेसिटी का प्रिवेलेंस बढ़ रहा है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी की एक वजह कोविड भी रही, एक वजह स्मार्ट टूल्स का यूज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम इस वक्त डुअल
उस पे प्रॉब्लम पे गुजर रहे हैं, जिसको हम इसलिए डायबिसिटी कह रहे थे कि डायबिटीज भी बढ़ रही है, ओबेसिटी भी बढ़ रही है, स्पेशली बच्चों के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी अगली जनरेशन है उसके लिए रिस्क हमारे पास बढ़ रहा है। सो डायबिटीज जो हम असाइन करते हैं यंग पर्सन के अंदर, बच्चों के अंदर, यंगर एडल्ट्स के अंदर, वो कैसे करते हैं? हाउ यू असाइन? यू ऑल आर डीलिंग डायबिटिक पेशेंट्स। तो बेसिकली जब हम असाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। वही क्लासिकल थिन है, लीन है, नहीं अब तो प्रिवेलेंस ओबेसिटी का बहुत बढ़ गया है, डीके के अंदर आ रहा है, हाँ डीके भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स को आपने देखना है। फिर हमें और क्या देखना है? हम ये देख रहे हैं कि ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और डीके हमें मिल सकता है टाइप 2 के अंदर भी। तो दिस इज रियली मेकिंग क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट। I'm again repeating, clinical diagnosis not a simple in every case. जबकि हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक दोनों को हम देख रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटिक के बच्चे मोटे होते जा रहे हैं और टाइप 2 डायबिटिस इज मोर कॉमनली प्रेजेंटिंग इन यंगर एडल्ट्स, ठीक है, और बच्चों में इवन मिल रहे हैं। सो वी आर लिटिल बिट मोर कंसर्न एंड वी शुड बी मोर कंसर्न ना रिगार्डिंग कि हम टाइप 2 डायबिटीज है, ये टाइप 1 डायबिटीज है, इसको कैसे हम असाइन करें। तो क्या फीचर्स देखिए, क्लिनिकल फीचर्स हम पहले देखते थे, हमने देख लिया। अब तो हम देख रहे हैं कि जी पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है प्लस ओबीज भी है, जिसको हम डबल डायबिटीज कहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी भी अवेलेबल चीज है वो एंटीबॉडीज है, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। तकरीबन अच्छी लैब्स के अंदर आपके पास ये 3 तो इसमें से हो ही जाती हैं जो आपके पास अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। अब हमारे पास जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं उसमें इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज है क्योंकि 50% चिल्ड्रन के अंदर पॉजिटिव होती है, और लेकिन चांसेस ये है कि ये बड़ों में कम हो जाती है, बड़ों में इतनी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। जबकि जो गैड एंटीबॉडीज है, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज 65 एंटीबॉडीज, हम देखते हैं कि 80% पॉजिटिव होगी चिल्ड्रन के अंदर भी और अडल्ट्स में भी। तो दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज in Pakistan too. Insulinoma associated autoantigen 2, it's also positive in 50% of children, but same problem with IA-like. These are less likely to present in adult. And then zinc transporter 8 antibody. This is also commonly expressed in children, but less than 10 years of age. So if we conclude this slide, the glutamic acid decarboxylase is freely available to get it done, और फ्रीली अवेलेबल नहीं तो एटलीस्ट कुछ लैब्स हैं जिनसे आप करवा सकते हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, और ये 80% चिल्ड्रन में और अडल्ट्स के अंदर भी आपको मिल जाती है नियर द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। तो हमें ऑटो एंटीबॉडीज का हमारे पास एक अच्छा वो हो सकता है कि हम ये करवा सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन ये। बट क्या हर पेशेंट के अंदर ऑटो इम्यूनिटी मिलती है टाइप 1 डायबिटिक में? नो। हमने कहा था कि टाइप 1 डायबिटीज 2 तरह की होती है, ऑटोइम्यून मीडिएटेड और इडियोपैथिक, जिसको हम एटिपिकल टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वी एज ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया, दिस इज मोर कॉमन इन पार्ट ऑफ अस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक टाइप 1 डायबिटिक, वही पॉलीयूरिया, वही पॉलीडिप्सिया, वैसे ही पेशेंट का वेट लॉस, पेशेंट में प्रेजेंट विद डीकेए, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन भी नहीं मिल रहा है, बट ऑटो एंटीबॉडीज आर नेगेटिव। सी पेप्टाइड करवाया, नॉट एक्सट्रीमली लो, सी पेप्टाइड की प्रोडक्शन हो रही है, ऑल्दो मे बी लो बट नॉट नेसेसरीली कि ऑलवेज एक्सट्रीमली लो। तो सी पेप्टाइड आपने करवा लिया, दिस इज नॉट एक्सट्रीमली लो, ऑटो एंटीबॉडीज नेगेटिव हो गई, क्लिनिकली आपको लग रहा है भाई ये तो टाइप 1 डायबिटिक ही है, तो यह दिस इज एटिपिकल टाइप 1 डायबिटीज। ऑटो एंटीबॉडीज की एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि ये टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। Absence of autoantibodies does not rule out. Although antibodies are very good tool for us to differentiate between type 1 type 2 diabetes, but अगर autoantibodies ना मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि type 1 diabetes को हम exclude कर सकें. One thing more, autoantibodies may be present in normal population too. अब हम बात कर लेते हैं मोडी की।
व्हाट इज मोडी भाई, कब सस्पेक्ट करना है? हर मोडी इज अ रेयर, ठीक है, 1 to 4% ऑफ पीडियाट्रिक डायबिटीज केसेस आते हैं इसके पूरे वर्ल्ड में ही। हमारे पास तो इसका खैर एक्यूरेट वो नहीं है, लेकिन मोडी पे जो हमारी कराची में जो NICH वालों ने स्टडी की थी उसमें उन्होंने केसेस को रिपोर्ट करा है जितने उनके पास मोडी कंफर्म्ड हुए, ठीक है। दिस इज अ वेरी वियर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज, बड़ी एटिपिकल सी डायबिटीज है। क्या मतलब कब सस्पेक्ट करना है मोडी? हमने जब हम देखते हैं कि एक पेशेंट आ रहा है, उसके पेरेंट्स में भी कोई अजीब सी डायबिटीज थी, उसके पेरेंट्स में यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स में भी कोई डायबिटीज थी, जब मल्टी प्रोबैंड्स 2 से 3 प्रोबैंड्स में आ रही हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो 50% चांसेस है कि उसके बच्चों में जरूर आएगी, ठीक है, 50% चांसेस हो गए ऑटोसोमल डोमिनेंट के। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से उसके प्रोबैंड से मिलेगी, उसको डायबिटीज है, उसके पेरेंट्स को, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिल सकती है, ठीक है। तो फेमिलियल फॉर्म, लेकिन मे बी माइल्ड डायबिटीज, हल्की सी डायबिटीज चल रही है, बढ़ नहीं रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रही है। मोडी की बहुत सारी सब टाइप्स होती है, मैं उनको थोड़ा सा आपको डिस्कस करती हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोचना जब आपको कोई वियर्ड किस्म की डायबिटीज मिल जाए जिसमें फैमिली हिस्ट्री मिले आपको कि इनको भी डायबिटीज है, इनके पेरेंट्स को भी डायबिटीज है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी डायबिटीज थी, एंड दिस इज ओनली फॉर 1 to 4% ऑफ पीडियाट्रिक डायबिटीज केसेस। मोडी की एक लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है, जो कॉमन है उसका हम देख लेते हैं। जैसे क्रोमोसोम 12 पर आती है HNF1 अल्फा, इसको मोडी 3 भी कहते हैं हम। फिर क्रोमोसोमल 7 पे एक डिफेक्ट आता है जो ग्लूकोकाइनेज वाला होता है, उसको मोडी 2 कहा जाता है। फिर क्रोमोसोम 20 पर आता है जिसको HNF4 अल्फा, मोडी 1, मोडी 3, 2, 1, ये 3 इंपॉर्टेंट है अगर हम समझना चाहें तो। फिर क्रोमोसोम नंबर 13 पर आता है जो कि इंसुलिन प्रोमोटर फैक्टर पे इफेक्ट करता है। फिर क्रोमोसोम 17 पे डिफेक्ट है जो कि HNF1 बीटा कहलाता है। देन क्रोमोसोम नंबर 2 जो कि न्यूरो D1 जिसको मोडी 6 कहा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA, माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज होती है, और फिर अदर्स भी आ सकती है। इसमें 3 ऊपर की जो 3 है, क्रोमोसोम नंबर 12, 7 और 20, मोडी 3, 2, 1, दीज आर relatively among मोडी, दीज आर कॉमन, ठीक है। क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट, वो जो हम अपने 3rd ईयर से पढ़ते आ रहे होते हैं कि जी क्लिनिकल पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, उसको एग्जामिनेशन करना है, देन गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज स्टिल ट्रू, कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने देखा कि जी जो टाइप 1 डायबिटीज है वो पॉलीजेनिक है, टाइप 2 डायबिटीज से पॉलीजेनिक है, बट जो मोनोजेनिक डायबिटीज है उसमें सिंगल जीन डिफेक्ट, हमने कहा था दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड दिस इज मोनोजेनिक, सिंगल जीन डिफेक्ट इज देयर। एज ऑफ ऑनसेट, yes, age of onset, although it's going to be changed, but still type 1 diabetes is more common. I'm talking regarding more common, 6 months to young adulthood. And type 2 diabetes is usually pubertal, although we are looking that type 2 diabetes is increasing in prevalence in younger adults and even in children because of increased prevalence of obesity. But monogenic diabetes, these are usually post-pubertal, around 25 एज, ठीक है। आमतौर पे ये 25 से 30 साल से कम उम्र में होते हैं, 25 से 30 साल के अराउंड होते हैं, लेकिन पोस्ट प्यूबर्टल होते हैं। बट जीसीके जो हमने कहा था, जो न्यूनेटल डायबिटीज होती है, NDM, न्यूनेटल डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, वो अर्ली भी हो सकती है, ठीक है। न्यूनेटल तो नाम बता रहा है, न्यूनेट्स की होती है तो 1 ईयर के अंदर ही होती है। अच्छा, जो क्लिनिक, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट में आई वांट टू ऐड समथिंग कि टाइप 1 डायबिटीज 6 मंथ्स के बाद होती है। अगर 6 मंथ्स अर्ली हो रही है, 6 मंथ्स के अंदर हो रही है, तो मे बी इट कुड बी पॉसिबिलिटी, देयर इज अ सस्पिशन ऑफ चांस ऑफ गेटिंग मोडी, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है और ऑटो इम्यून सिस्टम मेच्योर होने में 6 मंथ्स लगते हैं बर्थ के बाद, ठीक है। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं टाइप 1 के, वो एक्यूट होते हैं, एक्यूट, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, ठीक है, इवन डेज टू वीक्स मिल जाते हैं, ठीक है, रैपिड होती है। इसीलिए हमने कहा था कि 1/3 बच्चे टाइप 1 डायबिटिक के DK में लैंड करते हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बी वेरिएबल, स्लो भी हो सकती है, माइल्ड है, यूजुअली इंसिडियस है, बट सीवियर भी हो सकती है। DK कैन अकर इन टाइप 2 डायबिटीज, or monogenic, maybe incidental, or maybe it variable.
Then autoimmunity is still a good point. As we discussed, autoimmunity may differentiate between type 1, type 2 and monogenic diabetes. Yes, type 1 diabetes में autoimmunity मिलेगी, but type 2 diabetes में नहीं मिलेगी, monogenic में भी नहीं मिलेगी. Ketosis is common in type 1 diabetes. That means हमने कहा था कि 1/3 बच्चे जो हैं वो डायग्नोस ही DKA के साथ होते हैं. तो diabetic ketoacidosis is common in type 1 diabetes. In type 2 diabetes, it is uncommon, but not absent. ठीक है, कॉमन नहीं है लेकिन हो सकता है, अनकॉमन. While in monogenic diabetes, neonatal diabetes mellitus में it can occur, but in MODY, no. न्यूनेटल डायबिटीज मेलाइटिस को हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, जो मोनोजेनिक है उसकी एक लॉन्ग लिस्ट है. तो न्यूनेटल डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर हो सकता है, बट अदर फॉर्म्स में डीके नहीं होता है. ओबेसिटी हम देख रहे हैं कि जी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम पाकिस्तान में ओबेसिटी का प्रेवलेंस हमारे तो पास एपिडेमिक प्रोपोर्शन में पहुंच चुका है, तो हमारे पास ओबेसिटी बहुत हाई. हम टाइप 1 डायबिटिक के अंदर भी देख रहे हैं कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे भी ओबीस होते हैं. ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है. Well, जो monogenic diabetes है उसमें obesity is not a feature of monogenic obesity, वो population की frequency पे depend करता है. Disease की अपनी उसकी कोई characteristic नहीं है कि जो monogenic diabetes है वो obesity के साथ related है, no. लेकिन population जैसी है, अगर population obese है तो obesity मिल जाएगी, overweight है तो overweight, और अगर patient की population आपके पास normal weight की तो normally मिल सकती है. Disease की अपनी association as such नहीं है. जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें पॉपुलेशन की अपनी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, इसमें ओबेसिटी का कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है. बट टाइप 2 तो आपको पता ही है कि ओबेसिटी में उसकी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है. देन अ वेरी गुड मार्कर एक्एंथोसिस निग्रिकेंस. जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये मोनोजेनिक है, ये लाड क्या है ये. ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एक्एंथोसिस निग्रिकेंस, स्किन टैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप 1 में एक्एंथोसिस नहीं मिलेगा, टाइप 2 में यस मिलेगा, और मोनोजेनिक में भी नहीं मिलेगा. एक्एंथोसिस निग्रिकेंस वेल्विटी हाइपर थिकेंड किस्म की एक वेल्विटी पैच बन जाता है जहां पे फ्रिक्शन वाले एरिया, नेप ऑफ द नेक पर, एक्सिला पर, थाइस पर हो सकता है, ग्रोइन एरिया के ऊपर हो सकता है. एक्एंथोसिस निग्रिकेंस इज ए सरोगेट मार्कर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्किन टैक्स मिल सकते हैं. फिर आपके पास कुछ चीजें आती है जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, फिर डिसलिपिडीमिया है, उसको डिस्कस करते हैं. फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो क्या है, यंग पीपल में कौन सी डायबिटीज कॉमन है, तो यूजुअली मोर देन 90% है, लेकिन ये बिल्कुल रीसेंट डेटा नहीं है. ठीक है, और मोस्ट कंट्री में लेस देन 10% है. मोस्ट कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मोस्ट कंट्रीज के अंदर अभी भी टाइप 2 डायबिटीज लेस देन 10% है, बट इट्स इंसिडेंस इज increasing, its prevalence is increasing worldwide, और ये अब काफी बढ़ चुका है. While the monogenic diabetes के अंदर 1 to 4%, this is relatively rare type of diabetes. However, we have to think about it. Parents with diabetes also a very important part कि type 1 diabetic के अंदर जो parents होंगे उनको diabetes की family history मिलेगी या नहीं मिलेगी. ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपके पास जो type 1 diabetic है इसमें 2 to 4% मिल सकता है कि parents को diabetes हो. टाइप 2 डायबिटिक के अंदर 80% चांसेस है, बट मोनो डायबिटीज हमने कहा था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न है उसका, तो उसके पेरेंट्स को, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को फैमिली प्रोबेंट्स में चल रही होती है. तो 90% चांसेस हैं कि आपको मोनो डायबिटीज के अंदर हिस्ट्री मिलेगी कि जी फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव. Then LADA. LADA is although not a feature for young adults or for in children, but LADA में होता क्या है? LADA is a latent autoimmune disease of adult, and this is basically comes under the umbrella of type 1 diabetes. This is slowly progressive diabetes. Slowly progressive diabetes जो कि है कौन सी, इसका क्या, slowly progressive टाइप 1 डायबिटीज. ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी, सेम ऑटो इम्यूनिटी मिलेगी आपको अगर हम इसकी गेट 65 एंटीबॉडीज कराएंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि गेट 65 एंटीबॉडीज जो है वो 80% चिल्ड्रन में और अडल्ट्स में मिल जाती है, पॉजिटिव होती है. तो गेट 65 इज एन आइडियल एंटीबॉडी टू डिटेक्ट देम. इसको 1.5 भी कह रहे होते हैं. 1.5 आपने सुना होगा जी ये डायबिटीज कौन सी टाइप है, ये 1.5 है.
तो 1.5 का मतलब ये है कि हाफ द 1.5 टाइप 1 डायबिटीज के भी फीचर्स हो गए और कुछ टाइप 2 डायबिटीज के फीचर भी हो गए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के फीचर ये हो गए कि इसमें अगर हम एंटीबॉडीज कराएंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, गेट 65, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज के फीचर्स क्या हो गए कि क्योंकि ये पेशेंट जो है वो पहले इंसुलिन पर नहीं थे, वो ओरल पे चल रहे थे, ओरल पे मैनेज हो रहे थे, तो हम कहेंगे कि जी इनमें कुछ फीचर्स वो भी हैं। लाडा यूजुअली मिसडायग्नोस्ड, ठीक है। लाडा आमतौर पे हम मिसडायग्नोज करते हैं, यूजुअली मिसडायग्नोज होती है लाडा। लाडा के लिए आपको होना चाहिए कि हमें पता हो कि जी इनिशियली इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी, बट अब अगर उसकी शुगर्स अनकंट्रोल हो रही हैं, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, इंसुलिन डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम मिल रहे हैं और अब उसकी एंटीबॉडीज करवाते हैं, तो हमारा लो थ्रेशोल्ड होना चाहिए एंटीबॉडीज कराने के लिए, कहीं लाडा ना हो। अगर हमने एंटीबॉडीज करवा ली तो ज़्यादा उसका फिर जो ट्रीटमेंट प्लान है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लाडा हमने जब सोचना है जब ट्रीटमेंट फेलियर पे पेशेंट जा रहा है, ट्रीटमेंट फेलियर पे है और हमने उसको इनिशियली इंसुलिन की नीड नहीं थी, उसकी स्लोली प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज थी, इसमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी, टाइप 1 डायबिटीज की अम्ब्रेला के अंदर ही आता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं, ठीक है, मैं चाहूंगी कि प्लीज हम इस सबको अच्छी तरह से एक दफा रिपीट कर लें। आई नो यू ऑल आर वेरी अटेंटिव, बट मैं ये चाहूंगी कि इसको हम दोबारा से एक दफा अच्छा सा पढ़ लेते हैं और फिर हम इसी चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, ताकि इन चीजों को बिल्कुल क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर लें और अपनी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो हमें कब सोचना है कि जी ये डायबिटीज कोई और चीज है, ये टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 2 नहीं है। जब डायबिटीज एसोसिएटेड ऑटो एंटीबॉडीज नेगेटिव आ जाए आपके पास, आपने देखा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, इसको भी है, इसके पेरेंट्स को भी है, इसके प्रोपेरेंट्स में इसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी है, जरूर सोचना है। अगर आपको कोई डायबिटीज मिल जाए जो कि फर्स्ट 6 मंथ में कहें जी ये तो पैदाइशी डायबिटिक है, ये बच्चा अब माशाल्लाह 20 ईयर्स का हो गया, 30 का हो गया या 15 का, वॉट एवर द एज इज, ये शुरू से बच्चा पैदा हुआ था बस 2 महीने से इसको शुगर डायग्नोस हो गई, तो जरूर सोचेगा कि कहीं ये मोडी तो नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज फर्स्ट 6 मंथ में नहीं होती है। अगर उसको माइल्ड फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया तो है बट माइल्ड है, दैट मींस 100 to 150 मिलीग्राम पर डीएलआर है और वो प्रोग्रेस भी नहीं कर रहा, कर सालों से मेरा ये हाल है, काफी साल हो गए आई एम यूजिंग फलान दिमागा, ठीक है, और बस मेरी शुगर ऐसी ही रहती है, स्पेशली अगर यंग हो, ओबीज भी नहीं है, ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक डायबिटीज भी है उसको, तो सोचना है कि कहीं ये कोई और डायबिटीज तो नहीं है। Then associated conditions are very important. हमने कहा था कि सिंड्रोमिक फीचर्स में क्या, जैसे कोई डेफनेस तो नहीं है, कोई ऑप्टिक एट्रोफी तो नहीं हो रही है, कोई और सिंड्रोमिक फीचर से टर्नर तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम का कोई फीचर तो नहीं मिल रहा है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मोनोजेनिक डायबिटीज विद सिंड्रोमिक फीचर्स, जिसको हम सिंड्रोमिक मोनोजेनिक डायबिटीज कहते हैं, जिसमें डेफनेस हमने डिस्कस की, ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है या कोई और सिंड्रोमिक फीचर जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम के या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के हमें और कुछ फीचर्स ही मिल रहे हो, तो जरूर सोचना है कि क्या ये टाइप 1 डायबिटीज है, क्या ये टाइप 2 डायबिटीज है, ये कुछ और हो सकती है। Wherever the patient presents to you, क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स आपने देखी, फैमिली हिस्ट्री आपने देखी, आपने उसका रिकॉर्ड देखा, उनके समटाइम्स पेशेंट आपके पास डायग्नोज केस होकर आ रहा होता है, तो जरूर चेक कर लीजिए कि क्या पेशेंट की डायग्नोसिस एक्यूरेट है, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट मिसडायग्नोस हुआ हो। आखिर हमें इतनी मिसडायग्नोसिस की फिक्र क्यों है भाई, डायबिटीज है, डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है और हम सब हाइपरग्लाइसीमिया के नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं ना, तो फिर हम क्यों इतने कंसर्न है कि जी एक्यूरेट डायग्नोसिस करनी है, अगर टाइप 1 है तो टाइप 1 रखो, टाइप 2 है तो टाइप 2 रखो, और अगर मोडी है तो मोडी रखो। उसकी वजह जो बेसिक उसकी इम्प्लीकेशन है, अगर हम फर्ज करें मोडी के अंदर इंसुलिन देने होंगे, हमने तो बस ये तय कर लिया कि जो यंग पेशेंट होगा उसमें तो टाइप 1 डायबिटीज ही होगी, तो हमने उसको देनी शुरू कर दी इंसुलिन, शुगर तो कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन क्या हम उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन दे रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा प्रिक करवा रहे हैं जो कि ओरल पे मैनेज हो सकता है। फैमिली के लिए एक चैलेंज होता है, बच्चों के लिए एक चैलेंज होता है, ठीक है। फिर मेन चीज क्या आपके पास आ जाती है कि आपने ये जरूर देखना है कि उसकी कंप्लायंस कहाँ तक जाएगी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम देख रहे होते हैं। हमारे पास 2 रीजन होते हैं इंपॉर्टेंट कि हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस क्यों करनी है। एक तो उसका डायग्नोस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसको प्रॉपर मैनेज कर सकें, और दूसरा एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हमें चाहिए कि हम पेशेंट की
every effort should be put कि आप पेशेंट को प्रॉपरली डायग्नोज करें, एक्यूरेट डायग्नोसिस के साथ ही एक्यूरेट मैनेजमेंट होगी। लेट सपोज कि एक पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक था, यंगर था, यंग सा था, बच्चा था 12-13 साल का। मैंने सोचा कि ये 12-13 साल का बच्चा, इसमें तो टाइप 1 डायबिटीज ही होगी, मैंने एंटीबॉडीज कराई नहीं एंड आई हैव स्टार्टेड गिविंग इंसुलिन। तो क्या होगा, पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक है, ऑलरेडी ओबीस है, अगर मैं उसको इंसुलिन स्टार्ट करूंगी उसकी ओबेसिटी विल बी वर्सन। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि आपको डायबिटीज की एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड फिर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो कर सकते हैं वो करना है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा पेशेंट को क्लासिफाई कर दें बिल्कुल ठीक ठीक, हाँ ये टाइप 1 है, हाँ ये टाइप 2 है, हाँ ये मोडी है, हाँ ये लाडा, ऐसा हो सकता है? नो। समटाइम्स आपके पास एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस यू आर अनएबल टू डिफरेंशिएट। आप एंटीबॉडीज करा सकते हैं, आपने क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, सी पेप्टाइड करवा सकते हैं, ऑल द सी पेप्टाइड आपने देखा था कि इडियोपैथिक में नॉर्मल भी आ सकता है। सो हम क्या करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम पेशेंट को रीअसेस, जो हम पीरियोडिकली क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, उसमें अगर हम पेशेंट को 3 मंथ्स पे फॉलो करें तो हम देख सकते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। Sometimes it's really very difficult to classify patient which type of diabetes he or she is suffering from. तो passage of time will define you कि हाँ ये कौन सी डायबिटीज में फिट हो सकता है, ठीक है। बट इवन whenever patient refer to you, आपने उस पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और देखना जरूर है कि क्या पेशेंट एक्यूरेटली करेक्टली डायग्नोज हुआ है या इसकी डायग्नोसिस स्टिल इन डाउट है, क्योंकि डबल डायबिटीज भी हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज भी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, एंड मोडी और लाडा कैन अकर। So by this I'm ending my slides and I would love to take your question and answers, please. Thank you very much, Dr. Saima, Askari, for your very nice presentation. I would request now to Professor Rizwan Zafar Ahmed to take his chair on the stage as a panelist, and I would also like to invite Dr. Asim Shafiq as an expert panelist on the stage. So I would request to our IT people to hand over the online questions, if you have some, to our panelists, and in the meantime, while they are collecting their questions, I would love to have questions from the audience present in the hall. So no question? It's quite surprising, because we are trying to, develop a critical thinking in our audience. You must have some questions and never be shy to ask these questions. That's the only way to move forward and learn new things. And I'm sure that you have a lot of questions in your mind, but I'm surprised why you are not asking these questions. Anyways, in the meantime, some online questions. So we have a very pertinent question on Naseem Abid साहब ने पूछा है कि incidence of both type 1 and type 2 diabetes. So meanwhile I'm answering this question. Incidence of type 1 diabetes is still more prevalent in children and young adults, ठीक है। Although prevalence of type 2 diabetes is increasing, but not उसने अभी इसको exceed नहीं किया है, ठीक है। Type exact prevalence पाकिस्तान के अंदर exact incidence of both are unknown, क्योंकि 20 ईयर से कम उम्र यंगर उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें इंसिडेंस हमें एक्यूरेट नहीं पता है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का प्रेवलेंस बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज इज स्टिल प्रीडोमिनेंट इन चिल्ड्रन। देन सेकंड क्वेश्चन इज एज देयर एन अच्छा, डॉक्टर दाऊद आलम खान, नहीं सॉरी, प्रोफेसर राशिद महमूद साहब ने पूछा, इज देयर एनी रोल ऑफ मेजरिंग सीरम इंसुलिन लेवल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज? वेरी गुड क्वेश्चन। इंसुलिन लेवल मेजर करवाने से, ठीक है, लेट्स सपोज कि वी आर गोइंग टू चेक सीरम इंसुलिन लेवल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, नो, not at all, ठीक है। For type 1 diabetes, yes, you may go for
Autoantibodies check, yes. In type 2 diabetes, there is no role of getting serum insulin level done because serum insulin level, let's suppose कि बड़ी भी मिल रही है या नॉर्मल मिल रही है, serum insulin की half life वैसे ही short होती है, ठीक है. तो there is no recommendation, there is no guidelines saying कि आपने serum insulin level करवाना है to differentiate between among them. Okay. Then 18 to 25 years young patients obese. BMI 26 to 30, no specific clinical features, type 2 or other one. Okay, Khurram Bahis has some query regarding 18 to 25. This is a very good question, no doubt. देखिए जो younger people हैं 18 to 24, 25 years young patients से obese हैं, BMI उनका बढ़ा हुआ आ रहा है, although no specific clinical feature है, ठीक है. तो most probably this is clinical diagnosis of type 2 diabetes. You may get autoantibodies done. फैमिली हिस्ट्री कैसी, ये जरूर चेक कर लीजिए. आपने बताया कि कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है. ऑल्दो ओबीस है, दिस इज अ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर. ओबेसिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर, ठीक है. तो ओबेसिटी का इटसेल्फ होना, ब्लड प्रेशर चेक कर लेना आपने, उसने आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को देख लीजिए, उसकी फैमिली हिस्ट्री देख लीजिए. लेकिन बीएमआई जो आप बता रहे हैं, इस पर आप ऑटो एंटीबॉडीज करवा लीजिए, बट दिस इज मोस्ट लाइकली टाइप 2 डायबिटीज ही होगी. अच्छा, अदर वंस के लिए हमें नहीं जाना, क्योंकि हमने कहा था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज बोथ आर मोर कॉमन. जो मोडी है, मोडी के लिए आपको एक अवेयरनेस, एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि अगर कोई वियर्ड किस्म की डायबिटीज आ रही है, उसको भी है, उसके पेरेंट्स को भी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी है, कोई एटिपिकल सी, तो आप मोडी के लिए सोचें, अदरवाइज नो. टाइप 1 टाइप 2, आपने बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को देखना है, ठीक है. हमें से मेजर हमारा फोकस ये है कि आप टाइप 1 और टाइप 2 को एप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट कर पाए और फिर इसकी मैनेजमेंट उसके हिसाब से करें, ठीक है. तो टाइप 1 टाइप 2 के अंदर जो 18 टू 25 ईयर्स एज है, इसमें हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी. इवन पाकिस्तान के अंदर जो ओबेसिटी का प्रेवलेंस इट्स टू मच हाई. तो यहाँ पर तो जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बनेगी वो क्लिनिकल डायग्नोसिस विल बी टाइप 2 डायबिटीज. Then Dr. Shoaib Yunus, should we go for antibodies in all present? No. Dr. Shoaib Yunus, very good question. You have question. Should we go for antibodies? No. हर presented patient of diabetes में आपको antibodies नहीं करवानी. Where you are getting confused, जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद ये टाइप 1 तो नहीं है, वहां पर आपने करवाना है. जहां पे आपको लाडा सस्पेक्ट करें, आपका पेशेंट आया, डायबिटिक पेशेंट है, गुज़िश्ता 2, 3, 5 साल से दवाएं लेता आ रहा है, अब उसको दवाएं वो यूज कर रहा है मगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है या उसको, तो आपने एंटीबॉडीज करवानी. यहाँ पे आप लाडा सस्पेक्ट कर रहे हैं. जहाँ पे आप टाइप 1 और टाइप 2 को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्लिनिकल ग्राउंड पे. बच्चा आपके पास आया, 10 साल का मोटा सा बच्चा है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है आपको, फैमिली हिस्ट्री, तो आपने एंटीबॉडीज करानी है चेक करने के लिए कि कहीं डबल डायबिटीज तो नहीं है. क्योंकि हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 बोथ डायबिटीज आर नाउ प्रेवलेंट इन यंग पेशेंट. तो यंग पीपल के अंदर आपके पास जब आप क्लिनिकल सिनेरियो आप फिट नहीं कर पा रहे, तो आपने एंटीबॉडीज करवानी है. हर पेशेंट के अंदर नहीं करवानी, बट वेयर क्लिनिकल सिनेरियो इज रिक्वायर्ड करिएगा बिल्कुल. Thank you very much, Dr. Saima. Now it's time to involve our other panelists. There's one question that here in Pakistan, we don't have islet cell antibodies and zinc transport antibodies. And we are just left with glutamic acid decarboxylase 65 antibodies. So is there any lab in Pakistan which can offer islet cell antibodies, insulin autoantibodies like that? Or we are just left with the GAD 65 antibodies? GAD 65 antibodies almost available in Pakistan. Islet cell antibodies आपको मिल जाती हैं, चुगताई के अंदर हो जाती हैं, चुगताई लैब के अंदर. और हमारे islet cell antibodies लाहौर में चुगताई नहीं करता वैसे. अच्छा, NICH हमारे पास, NICH के पास सईद, डॉक्टर सईद लेबोरेटरी, वहां पर हम करवाते हैं पूरा अपना ऑटो एंटीबॉडीज का पैनल. They are doing it. And what about zinc transport antibodies? Yes, this is going on. This is also available in Pakistan via Saeed Afzal laboratory. Because in majority of the cases when we have type 1 diabetes diagnosed, then we are left with another puzzle. If the patient is autoantibodies positive, that we label it type 1A, and some of the type 1 diabetics are antibody negative, they are labeled as type 1B. Here comes the role of zinc transport antibodies, which can differentiate between the two. Your take on that?
No, zinc transporter antibodies are usually present in less than 10 years of age. अगर आपका बच्चा इतना young age के अंदर आ रहा है, तब तो बात 10 years of age से less है, तो this is positive. Otherwise ये और भी positive नहीं मिलती zinc transporter 8. और जो idiopathic उसकी बात है, उसमें zinc transporter 8 antibody से positive नहीं होती है type 1B के अंदर. Now there is another question for our panelist, Dr. Izwan Zafar Ahmad, and this question is from Dr. Poco X3 Pro. You know, this happens when you sign in with your mobile phone rather than with your own name. So I will call that guy Poco X3 Pro, Dr. Poco X3 Pro. So this is the question, how to calculate insulin dosage in type 1 diabetes in children, how to start insulin. Professor Izwan Zafar, the question is for you, how to calculate the dose of insulin in a newly diagnosed type 1 diabetic. I would request Dr. Saima to please comment on this. Okay, Dr. Saima, over to you. ओके, इंसुलिन इनिशिएटिव जो डोज होती है हमारे पास वो 0.1 टू 0.2 यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट बेसल इंसुलिन होती है. एंड as we all know that in type 1 diabetic there is absolutely virtually no production of insulin, so we have to cover basal bolus both. So 0.4 to 0.5 unit per kilogram body weight per day. It will be divided in basal bolus regime. With every meal it should be given bolus and basal should be given once daily. So you mean that we need the physiological replacement in type 1 diabetes, and our clinical experiences show that there is no place of fixed regimens in those patients, and we must go for 1 basal and 3 bolus insulin injections. Do you agree to that sentiment or comment? Dr. Saima? Okay, one thing I want to add, हम पाकिस्तान में financial constraints की वजह से ideally we should given के 3 time आपको bolus देना है और 1 time आपको basal देना है, but in every case this is not possible. So what we do, we put patient on regular and NPH insulin twice daily regime. ठीक है, ideally हमने बात कर ली, लेकिन क्योंकि real scenario में clinical practical life में this is not feasible for every patient, तो हम at least ये कर सकते हैं कि हम regular insulin को twice daily दे दें और NPH को twice दे दें. ये हम combine भी कर सकते हैं via syringe. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने SMBGs के जो हम एजुकेट करते हैं पेशेंट को कि फिर आपने बताना है कि आपकी शुगर की रिक्वायरमेंट इंसुलिन के हवाले से कितनी है. इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो उनको सिखा देंगे. ये जो मैंने आपको डोज बताई, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग इनिशिएटिंग डोज. इट विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड पेशेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड अदर्स एज वेल. Thank you very much. There is another question and it's open for all the panelists, anyone who wants to answer this question. My question is that type 1 and type 2 diabetes are entirely 2 different types of diseases. Although they share one thing in common, that is hyperglycemia, but while type 1 diabetes is a disease of absolute insulin deficiency, type 2 diabetes is the disease of hyperinsulinemia, where patient is swimming in a sea of insulin. So how pertinent it is to give insulin in type 2 diabetes at the cost of controlling blood glucose only, and then we are going to make every other thing worse when we push those hyperinsulinemic levels in the patient to the superphysiological level by using exogenous insulin. Let it simplify how it's pertinent and how important is it to put a patient of type 2 diabetic who's already obese, he's a patient of hyperinsulinemia and all the features of insulin resistance, how justified is it to put that patient on superphysiological doses of insulin, and what are the hazards behind? Professor Izwan Zafar. I think we should keep in mind various factors like the coexistent already obesity status of the patient. And secondly, we also need to take care, we need to assess how much drugs the patient is already on. Is he compliant? Is he taking maximum doses of or the recommended doses of oral hypoglycemic drugs?
And if it is all there, we also need to see ke, what are the atherosclerotic cardiovascular disease status or the renal function status of this patient. I think we all need to take care of these elements. And then regarding insulin, I think we should not delay insulinization unnecessarily to prevent from, we are in particular talking about insulin, not about GLP-1 receptor agonists. So we should not compromise till the development of complications. And if patient is having HbA1c more than around 9 or blood sugar is not controlled, I think we should go for it. Okay, okay. Here's a question from the question, and then I will move to doctor. Just comment? Yes, yes, I will move to you. But my question was that using insulin in a patient who is already having higher insulin levels in the blood, and there are now studies available that by increasing our exogenous insulin, we are just taking care of the blood glucose level, but we are making every other thing worse. For example, we are increasing the risk of cardiovascular death by 3-folds. We are increasing the risk of cancer by 2-folds. We are increasing the risk of Alzheimer's disease by 2-folds. So rather than putting these patients on insulin and decreasing their life expectancy, why not to just emphasize on the lifestyle modifications, low carb lifestyle and all that? I would love to take your comments with these worthy panels. So exactly, I totally agree with you with what you just comment about putting the patient in high insulin doses and disregarding the other effects of insulin on the body, as you just mentioned. So the concepts remains the same, that basic lifestyle measurements should not be overlooked. Whenever we counsel our patients for diabetes management, we have to go step by step. I think Saima would agree with that we have to talk about diet control, we have to talk about weight control, we have to talk about physical activity, and then step on to various medications that are on board. I'm talking about type 1 and type 2 both. As regard to type 2 diabetes, as you mentioned about putting them on higher insulin levels, of course, we have to control the numbers. Number game is on in the whole spectrum of disease of diabetes. Reason being that you have to control the micro and macrovascular complications. Otherwise, what are you using the treatment for? So you have to control those numbers. You may have to put the patient on supraphysiological dose of insulin. But again, at the same time, you have to see the compliance issue, the other aspects of treatment, that is the diet control, the weight loss, the exercise. And then, of course, there are various other treatments for type 2 coming on board, like GLP-1 receptor agonist, SGLT2, which are actually, helping to control these high insulin burdens. That's a kind of a practical approach, but I'm sure there must be some scientific literature to that, which can add on as to, how to take this high insulin burden really, because patients are usually often on, maybe 200 to 300 units per day, which is like, and still their sugars are not under control. So it's not about, just putting the burden of high insulin dose. You have to see what is the issue. Sometimes the issue is very minor, like for example, the insulin site is not correct, and they are putting in the 50 and 60 units of insulin at once, which is not working. The skin cannot absorb it. Sometimes they are not putting the insulin in right temperature control, and they are not using the right needle to, put that insulin. So these are very little minor issues which we as clinicians and physicians often overlook in our busy clinical practice. And that's the reason that diabetes is not a single man show. It needs a teamwork. And that's the reason you want a diabetes educator in your clinical practice. You want a dietitian around there. And then a diabetic nurse can help a lot of things. So that's how it should go. I think. Thank you very much, Dr. Zareen Kiran. Your point well taken. You can enjoy that luxury in a comfortable setting of an hospital with educator and nurses and all that. But in majority of the clinics, a doctor has to be the physician, the nurse, diabetes educator, everything, food specialist and all that. It's now time to involve Dr. Asim Shafiq, who's a renowned diabetologist and has a very close eye on the current concepts.
Do you want to add on something on that little note? Yes, of course. Means that if we are giving the insulin more, insulin is a growth hormone. Yes. When somebody is taking already hormones already is increasing in the body, he is taking more and more food as well. So fat is the main problem of that diet. So weight loss is the most common thing to be treated in that particular patient. So when you give the insulin may give rise to more growth hormones, more intake of foods, more intake of Cell hormones. proliferation. Yes. So as much as lifestyle modification, along with that of low carb, along with that of fast, that may help that guy very well. I think that you may go for protein, you may go for fat, and very low carb for such patients. Actually, we have seen in our clinics here in Lahore, I don't know what's the status in Karachi, we have seen, and we have seen in quite a number of patients, Dr. Saima and Dr. Zareen Kiran, we have seen a number of our patients when we adopt a low carb lifestyle and we just, capitalize on proteins and fats, and we put the patient on 30 minutes exercise on regular basis. We have reversed not only the insulin, but in majority of the cases, number of the oral agents as well. Have you any experience in your esteemed departments over there? Hello? Sorry, I couldn't get the last point. If you can repeat. I said that here in Lahore, we are experiencing in our clinics the low carb lifestyle with major emphasis on the use of proteins and fats. And we are just cutting down on the carbohydrates. And that not only is that our patients are getting rid of insulin, but they are also decreasing the number of oral medications down the course. Do you have any experience in your esteemed departments over there? So if I talk about my institute, we have good dietitian, and what we often communicate with each other, and with regard to specific patients, we often talk about a balanced diet. Adequate proportion of carbs, proteins, fats, and vegetables and fibers, they all play their role in the overall health. With regard to your practice about lowering carbs more as compared to protein and fats, and rather enhancing them so as to reduce the number of units of insulin, we haven't come across such practice as such, and we haven't practiced that yet. Because because in general, proteins and fats do have their own role, but again, the excess of protein and fat as compared to carbs may have other side effects, especially if the patient has complications, like for example, CKD or malignancies or other kind of associated medical conditions, because our center is a kind of a referral center, and we often get complicated cases, transplant cases and all that. So we cannot implement such kind of pure practice as you just mentioned. Maybe we can do that, we can do some pilot study and then research on that. But as such, not in my practice. Actually, I was talking about the patients with pre-diabetes and the patients which are routinely visiting our primary healthcare physicians. I am not talking about the patients who are with advanced complications ending up in dialysis centers or ICUs or the cardiology. I am not talking about all this. Okay, even if you talk about pre-diabetes and that's a different protocol. Yeah, I understand. So even in those patients, we haven't practiced that as yet. Although we do ask them to cut carbs, especially the unhealthy ones. But of course, there are complex carbs which can be replaced, which replace the simple carbs. For example, I often advise my patients to, remove bakery items and maide ki bani hui cheezein from your diet, and instead introduce red beans, chole, and high fiber diet, brown bread and all that. So it's kind of, the carb content is there, but the quality of carbs is different. I don't know, Saima would explain further from her institute, from the experience of her institute.
and would add on this. Over to Dr. Saima, please. जी, जहाँ तक बात आपने की कि भाई एक लग्जरी है डाइटिशियन का होना और एजुकेटर का होना, एटलीस्ट बेसिक क्लिनिक पे, क्योंकि हमारा टारगेट आज का था कि हम जनरल प्रैक्टिशनर्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जीपीज भी अपनी पेशेंट्स को 3 बातें जरूर बोल सकते हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाएं नहीं है, इंसुलिन नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा फिजिकल एक्टिविटी है, आपका बैलेंस डाइट है। वी डोंट प्रेफर कि आपने ये चीज़ ज़्यादा खानी, ये चीज़ कम खानी। हम उससे कहते हैं आपने सब चीज़ें खानी है, थोड़ी थोड़ी खानी है, बिकॉज अगर फैट का कंटेंट बढ़वाएंगे तो फैट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिस्लिपिडीमिया और कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी में भी हाई। 3 चीज़ें पेशेंट्स को ज़रूर बतानी है कि जितनी अहम आपकी दवा है उतना ही अहम आपका 30 मिनट चलना है और आप उतना ही अहम आपका खाना है, बैलेंस डाइट। सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, फलों का इस्तेमाल जरूर रखना है, थोड़ा फल खाना है, एक वक्त में एक फल खाना है, दोनों खानों के बीच में नहीं खाना है। आपने रोटी का इस्तेमाल जो करना है वो ज़्यादा बगैर, जो हम कहते हैं छने आटे की रोटी करना है। मोटी मोटी बातें आप जरूर अपने बता सकते हैं बीइंग अ बिजी क्लिनिशियन, क्योंकि जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हेल्थ केयर प्रोफेशनल एम्फेसाइज करेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्री डायबिटिक की जहां आपने बात की, इवन टाइप 2 डायबिटीज हम देख रहे हैं रिवर्स हो जाती है, बेरिएट्रिक सर्जरी के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, इवन जीएलपी पे पेशेंट कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का तो बहुत मेजर इम्पैक्ट है, और प्री डायबिटीज से तो डेफिनेटली डीपीपी प्रोग्राम ऑलरेडी बता ही चुका है, आपको प्रूवन है, फैक्ट है कि उसको रिवर्ट किया जा सकता है या एटलीस्ट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन नीड भी कम हो सकती है, इवन ओरल एंटी डायबिटिक में रिड्यूस। Thank you very much, Dr. Saima. But the take home is that for all audience, because when the esteemed consultants like you, when they talk and that is being picked up our physicians, that goes a long way. यहाँ पे before involving Dr. Rizwan Zafar to end up the session, there are 3 key take homes from today's presentation. Number 1. If you are in doubt whether it is type 1 or type 2, always use insulin, because a patient is of type 1 and you are using orals, you are going to kill the patient. But if it is a patient of type 2 diabetes and you are using insulin, that will not make much difference until the results of the labs come back to you. And never be in a hurry to differentiate between type 1 and type 2 diabetes. If someone asks, because this is an era of Google and YouTube, patient asks about what type and what kind of diabetes I have. If you are in doubt, just simply tell them that I have no idea what kind of diabetes you have, but I am putting you on insulin for the moment because it is much more safer than the orals. And when your labs will come back, we would be in a better position to emphasize what sort of diabetes you have. And if it comes to be type 2 diabetes, we will really switch you over to orals from insulin. And third take home is that your dietary fat never goes to your triglyceridemia, hypertriglyceridemia. There is a separate way. मैंने पिछली दफा भी जब हमने यहाँ पे किया था, मैं सिर्फ मैडम विद ड्यू अपॉलॉजी, बसात एहतराम और बड़ी यानी एहतराम और अदब के साथ मैं ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम चूंकि ये पहले अपने लोगों को पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे तकरीबन देयर आर ऑलमोस्ट 200 odd डॉक्टर्स ऑनलाइन एंड ऑलमोस्ट 70-80 इन द हॉल, तो मैं उनको कंफ्यूज करना नहीं चाहूंगा. द डाइटरी फैट goes directly into the intestine, that then it is packed into the fat transport vehicles called the chylomicrons, and that is directly transported to your fat cells. And only the fat, only the carbohydrates which travel to your liver, and they are converted into the fat by the process called de novo lipogenesis, and they are exported in the form of triglycerides. They are the fats really which increase your lipid panel. So dietary fat does not increase your lipid panel. It is basically the carbohydrates which via the liver are turned into the triglycerides by the process called de novo lipogenesis. And so today's conclusion is control your carbohydrates, prioritize proteins. 1 gram per kg body weight is absolutely safer for any population without any complications.
1 gram per kg body weight proteins are good enough, and don't fear fat. Control carbohydrates, prioritize proteins, and don't fear fats. With that, I now sign off, and I hand over the mic to our panel of our chairman of panelists, Professor Rizwan Zafar, to give his final verdict and conclude the session. Thanks all. It's been very nice session, and I would like to make comment about whenever there's confusion in between, type 1 or type 2 diabetes mellitus and the option of starting insulin. I would like to emphasize that it is critically crucial to investigate and not to miss the monogenic diabetes, especially under 25 years of age, or around 30 years of age, because patients, especially among MODY and patients with few genes like KAPT genes, or patient with NF1A and HNF14, these patients may be managed well on sulfonylureas. And second important thing is that if we can't afford, families, patients, parents, and doctors, we cannot afford to misdiagnose these patients. Because if we properly diagnose these patients through genetic testing, we can further screen the family members. And so we can prevent or identify in time such patients. I think today's topic was very crucial, very important, and needs to be discussed more and more in future. With this, I thank you very much. Thank you very much, our worthy speaker and our panelists. We are, really honored by your presence, and we are very thankful that you spared your valuable time from your busy hospital and clinic schedule. Thank you very much. We would love to have you again in our forthcoming modules. Thank you very much. Thank you. Thank you very much to all the worthy inviters, and I'm honored to be part of this.